So breakfast is here. These puris are so wow soft. So when I wake up just now and I went out, I realized it's like drizzling outside, and they said this is happening from morning. Lovely weather. Somehow suddenly it's not cold anymore, and rain helps with the fog. So no more smoke, no more fog. It looks lovely now. I can spot the cloud. So beautiful. The weather is so lovely. Good weather to walk. I'm loving it. By the way, this is 10 a.m. The time is 10 a.m. now, and but the roads are still. No one is here because this is not any. By the way, roads are still empty because these are not some main roads, and the people of Republic of Lahore don't really wake up that early in the morning. They wake up very late. I want to have some breakfast, but my driver is not here yet. And I'm hungry. I'm really, really hungry. So I think I'm going to either order or I'm going to take Uber to the restaurant. So we are here at this small restaurant called Al Madina restaurant and milk shop. It's famous for their special breakfast called Halwa Puri. Roadside, we have to sit on the roadside. Biryani master is over there. And, we're going to enjoy our food here at this place. तो जी ये है अल मदीना रेस्टोरेंट, काफ़ी फेमस है हलवा पूरी के लिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। आज हम यहाँ खाना खाने वाले हैं, नाश्ता करेंगे हलवा पूरी का। टेबल लग गया है, लेट्स सी आज हमें क्या मिलता है, हलवा पूरी कैसा होता है। तो ये वाले भाई साहब ने डिस्कवर किया है ये छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हलवा पूरी बहुत अच्छा होता है। तो जी हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी अपने हलवा पूरी का, और मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो देखते हैं ये कितनी देर लगाते हैं और हम खाते हुए कितनी देर लगाते हैं। चाय का कप मुझे चाहिए होगा साथ एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ चाय के कप बहुत छोटे होते हैं। सिंगापुर और मलेशिया में हमें चाय के कप जो हैं बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पे मुझे हमेशा 2 कप चाय पीनी पड़ती है। तो जब खाना आता है मैं आप लोगों को खाना दिखाता हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर द, खैर जाओ थोड़ी देर पुत्र। So I'm waiting for the breakfast here now, Halwa Puri. Hopefully they will bring it here quite fast. And I'm craving for the tea. The tea is very, very delicious here because they make with the fresh cow's milk. And, the cups are small, not like Singapore or Malaysia. I have to order 2 for myself. Really cannot wait. I'm very, very hungry. The weather is just so lovely. Whenever it rains, it's not that cold. So in fact, I was quite okay with the t-shirt, but I get scolded from my aunt for not wearing proper full sleeve shirt and jacket. So I just put on this sweatshirt. Hopefully I won't feel cold and it doesn't get that cold. So you guys keep watching. So breakfast is here. These puris are so wow soft. Halwa looks delicious, and that's our chickpeas curry. Wow, I don't know if 2 pieces are enough for me or not. Let me try. So जी हमारा हलवा पूरी आ गया है, खस्ता खस्ता नरम नरम ताज़ा गरम पूरियाँ, उसके बाद हलवा है और चने हैं उसके साथ। ज़बरदस्त जी, खा के हम चेक करते हैं कि कैसा है।
Our bill is here. It is about 5 Singapore dollars, and it's very cheap for 6 puris, water and tea. very cheap. 820 रुपये बिल बना है, जो कि बहुत कम है। 6 पूड़ियाँ थी, पानी था, चाय थी। तो जी पेट भर गया, अब हम चलते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।